हेलो फ्रेंड्स लाइव हिट ऑफिशियल चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आज आपण मानकु पई नै कि आसी जनरल साइंस रो सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर। एही वीडियो सब एग्जाम पई इंपोर्टेंट रहइबो। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियो को लाइक करबा संगरे संग मानकु शेयर करंतु। चैनल को यदि प्रथम थर पई आछंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु, जहा द्वारा नेक्स्ट हमर इंपोर्टेंट वीडियो सर्वप्रथम आपण पाई परिबे। तबे चलंतु आज वीडियो स्टार्ट करबा। प्रथम क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फ्लोइंग इज क्विक सिल्वर? एमानंको मध्यरु क्विक सिल्वर कोटा? एल्युमिनियम, मर्क्यूरी, लेड, जिंक। राइट आंसर ऑप्शन बी मर्क्यूरी। व्हिच अमंग द फ्लोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन? कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो राइट आंसर ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 3, नॉट इज ए यूनिट ऑफ डैश? स्पीड, डिस्टेंस, डेप्थ, एक्सेलरेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए स्पीड। नॉट इज ए यूनिट ऑफ स्पीड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच अमंग द फ्लोइंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नॉट एसोसिएटेड विथ स्नेक? एमानंको मध्यरु कोटा स्नेक रो ब्रांच नुह? हर्पेटोलॉजी, ओफियोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी, सौरोलॉजी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सौरोलॉजी। सौरोलॉजी होची स्नेक रो ब्रांच नुह, सौरोलॉजी होची लिजार्ड रो ब्रांच। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग गैस readily combine with the hemoglobin of blood? कार्बन मोनोक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर ऑप्शन ए कार्बन मोनोक्साइड। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम? राइट आंसर ऑप्शन बी क्रायोलाइट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय निकेल? तो राइट आंसर ऑप्शन ए डर्माटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 8, in flower, blue and purple color is found due to the presence of which of the following pigment? Option chlorophyll, hemoglobin, anthocyanin, albin. Right answer option C anthocyanin. Question number 9, which of the following organism can reproduce through regeneration? Hydra, yeast, plasmodium, planaria. The right answer option A hydra. Next question, the material covering the bone of reptile is calcium, chitin, keratin, none. The right answer option C keratin. Question number 11, the most abundant biomolecule on earth is dash? Mineral, salt, carbohydrate, vitamins. The right answer option C carbohydrate. Next question, gymnosperm are never dash? Medium sized tree, tall tree, herbs, shrubs. The right answer option C gymnosperm are never herbs. The process of formation of seeds without fertilization in flowering plant is known as budding, apomixis, sporulation, somatic hybridization. The right answer option B apomixis. Which of the following are lower invertebrates? Porifera, Platyhelminthes, Nematoda, all of the above. The right answer all of the above. Which of the following is the innermost layer of the heart? Endocardium, myocardium, epicardium, all of the above. The right answer option A endocardium. Next question, which of the following is protein hormone? Oxytocin, insulin, THS, antidiuretic hormone. The right answer option B insulin. Which property is not exhibited by a disease causing pathogen? Option invasiveness, toxigenicity, virulence, cooperation. The right answer option C virulence. Next question, mercury is a dash? Solid metal, liquid metal, solid non-metal, liquid non-metal. The right answer option B liquid metal. Mercury is a liquid metal. The important metal used with iron to produce stainless steel is aluminium, chromium, tin, carbon. Right answer option B chromium. Which of the following metal has least melting point? Gold, silver, mercury, copper. Right answer option C mercury. If lime water is kept in the air, it turns milk due to presence of carbon dioxide, nitrogen, oxygen, sulfur dioxide. Right answer option A
carbon dioxide. Hard water and soft water can be distinguished by using. So here right answer option C, detergent. Removal of carbon particles from air involves the principle of precipitation, filtration, electrophoresis, sedimentation. The right answer option C, electrophoresis. Soda water has a pH value is dash. The right answer option B. Question number 25. What is the scientific name of vitamin A? Tocopherol, niacin, retinol, ascorbic acid. The right answer option C, retinol. तो फ्रेंड्स ये थिला आजिर वीडियो जनरल साइंस रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जदि वीडियोटी आपको हेल्पफुल होइतिबो भलो लागितिबो तेबे वीडियो को लाइक शेयर करबा को भूलिबे नहीं एमिति नुआ नुआ वीडियो पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब करि बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु आपनकर सुचिंतित मतामत हमकु कमेंट माध्यम रे जणांतु। रहुछि फ्रेंड्स, धन्यवाद।